Suppose this is one rib and this is a costal cartilage. Costal cartilage. This is the head of a rib, neck of a rib. Then there is a tubercle on the rib and there is an angle. Angle मतलब angle यहाँ पर रहता है जहाँ से rib ऐसा टर्न लेके आगे चला जाता है. Angle. Head, neck, tubercle, angle. This is the anterior end. This is the costal cartilage and here is the sternum. What kind of joint exists between the anterior end and costal cartilage? Primary cartilaginous. Because that eventually the rib and cartilage, hyaline cartilage becomes together. What kind of joint exists between the costal cartilage and sternum? Huh? Bol. Huh? Synovial. Synovial, but from 2 to 9, not 9, 2 to 6. Synovial because उधर थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए ना, रिब्स ऐसे ऊपर नीचे होते तभी तो रेस्पिरेशन होता है. बट फर्स्ट इस जॉइंट को क्या बोलेंगे आप? कॉस्टो कॉन्ड्रल and इसको chondrosternal. So chondrosternal are synovial except for the first one. First one is also primary cartilaginous. So ये क्यों क्या ये आपको बाद में बताएंगे. And here is another rib. Here is another rib, tubercle, angle. ये सब छोड़ दो. In each rib, between the two ribs is an intercostal space. Between the two ribs is intercostal space. In each intercostal space, there are muscles. There are muscles, there are arteries, there are veins, there are nerves. Muscles are in 3 layers. 3 layers. आपने हिप बोन जो पढ़ा था, तो हिप बोन, the iliac crest, there was external oblique, internal oblique, transversus abdominis. Here there is external intercostal, internal intercostal, transversus thoracis. So between the layer 2 and 3, internal intercostal and transversus thoracis, or intercostalis intimae उसका दूसरा बीच वाले सेक्शन का नाम है, there lies the neurovascular bundle. So there is external intercostal, internal intercostal, neurovascular bundle and intercostalis intimae or transversus thoracis. Now I am drawing the position of the arteries. From the subclavian artery arises one artery, one branch, which is internal thoracic artery. That internal thoracic artery, now we are talking in internal thoracic artery, in each of the space gives an anterior intercostal artery. This is upper and this is lower. Anterior intercostal artery. Okay. Now here I am drawing for you the internal thoracic. After the sixth intercostal space divides
into two branches. Divides into two branches. One continues down over the anterior abdominal wall as superior epigastric, and another becomes musculophrenic. 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 ओमकार उभा रहा. ओमकार झा. वापस युधिष्ठिर. आज उसका टर्न नहीं है. ओके, लड़के भी गए. रविदास तेरा टर्न है अटेंड करने का. हम दिल्ली वाले जो रोटेशन में अटेंड करते हैं, आज तेरा टर्न है. बाकी लोगों को शाम को समझाएगा बैठ कर. और कितना इनोसेंस दिखा रहा है, कि क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा. मस्कुलोफ्रेनिक एंड अभी भी वो बाजू वालों को भी पूछ रहे क्या बोल रहे सर. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक. दिस मस्कुलोफ्रेनिक gives anterior intercostal arteries in space number 7, 8 and 9. 7, 8 and 9. So now if I have to summarize the anterior intercostal arteries, in space 1 to 6, they are given by internal thoracic. In space 7 to 9, they are given by musculophrenic artery, which is branch of internal thoracic. In space 10 and 11, there is no anterior intercostal artery. There is no anterior intercostal artery. देखो ना, because वो स्पेस इतना छोटा हो जाता है ना, यहाँ से फिर there is only posterior intercostal artery. That brings us to another topic, and that is posterior intercostal artery. Posterior intercostal arteries arise from thoracic aorta, dorsal thoracic aorta. अभी तक आपने खाली एक वर्ड सुना रहेगा मेडिकल में आने से पहले, एओर्टा. एओर्टा. अभी आज के बाद आप और वर्ड सुनेंगे. thoracic aorta, abdominal aorta, ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta. Welcome to MBBS. This thoracic aorta gives the posterior intercostal artery. Posterior intercostal artery, which goes and does anastomosis with the upper anterior. Anastomosis with upper anterior. आपने शादी वादी के ऐसे पिक्चर्स अगर देखे रहेंगे, फैमिली पिक्चर्स, तो उसमें ऐसा होता है कि चलो 1, 2, 3 start. So the posterior intercostal artery articulates with upper anterior intercostal artery. तो आपने जो शादी वादी के पिक्चर देखे रहेंगे ना, देखे कि नहीं आपने, हम आपके है कौन, हाँ ऐसा कैसा एकदम नो वायलेंस विलेंस कुछ नहीं. तो उसमें भैया की शादी हो जाती है. ओके, जिससे शादी हो जाती है उसकी एक छोटी बहन होती है. आज वैलेंटाइंस डे, तो थोड़ा सा मैं रोमांटिक वे में आपको सिखा रहा हूँ. और इस भैया का एक भाई होता है, उसका नाम है कोलैटरल. फिर उसको दिखाई देते कि बाबा इधर तो हो गया, अभी यहाँ पे 14 फरवरी को मैं जाके. सो दिस कोलैटरल branch of the posterior intercostal artery, anastomosis with lower anterior intercostal artery.
ओके, इनके दो लड़कियां एंटीरियर इंटरकॉस्टल की, डॉर्सल थोरैसिक एओर्टा की पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल एंड उसका छोटा भाई कोलैटरल। हम आपके है कौन, क्या बात है, बंद करो। हाँ कॉम्प्लिकेशन है, अभी इतना सब नहीं नहीं बढ़ा सकता ना, आप खाली याद रखो कोलैटरल नीचे से। अभी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी in space 3 to 11, in space 3 to 11 is given by descending thoracic aorta, descending thoracic aorta, thoracic aorta, descending thoracic aorta, समझ लेना। तो अभी क्या रेवा, अभी क्या बचा, फिर कौन सा स्पेस बचा? 3 to 11 is from descending thoracic aorta, हाँ 1 2, space 1 and 2 it is given by superior intercostal artery। हाँ नाम सुना है आपने, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, किसने सुना है, किसने सुना है, हाथ ऊपर करो। हेड फेस नहीं, हो गया आपका खत्म। साइली, राधा, रचना, रमित, हरी, हरी ना, हरी, हरी, त्याच्या मागे कोण बसलं, रत्नदीप आहे का तो, काय नाव तुझं? हां प्रशांत, पृथ्वीराज दोषी, कृषांक, तुमको क्या लगता है, तुम्हारा नाम नहीं ले सकता मैं, भले तुम मेरे को छोड़ दिया मेरा साथ। Superior intercostal artery is a branch of costocervical trunk, which is a branch of subclavian. Subclavian के branches, 5 branches of subclavian: vertebral artery, costocervical trunk, thyrocervical trunk और thyrocervical trunk. Patient मर 1 2 3 start.